A huge round of applause, everybody. And here we present the new blood Bharateeyans. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the entire cast and crew who have worked day in and out. It's an utmost proud moment for all of us. One thing, brilliant job. Brilliant. And I'm telling you why. Okay. Number one, I loved the way you have kept the names. Okay, it's a very unique thing, and I've always wondered if somebody has the guts to do something like this. I never had the guts to do something like this. This is a very brilliant thing, and the cast looks so fresh and nice, and so passionate, and so involved in the film, engaged in the film. You know, it looks like they are the characters, and also the film looks like something I need to watch, I must watch. And so it's a brilliant, brilliant effort. And I know what it means to carry the burden of young cast on your shoulder, but you've got strong shoulders, and they are brilliant people. And I hope people would love this film. And I also love the name Bharateeyans. That's a very, very good name. And the youth of India today needs to get united, take us to the next level. And for that, we need to hear lots of young stories, and this is one of them. So I wish you guys all the best. जब आपको बुलाया गया कि दे वांट यू टू, विवेक सर खास करके आपको जब मैं बोलता हूँ कि मुख्य अतिथि आप हैं और आप यहाँ हैं, मौजूद हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब मैं भारतीयंस की बात करता हूँ? और मैं खास करके उस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जब मैं कश्मीर फाइल्स की बात करता हूँ, कि जहाँ स्टार कास्ट नहीं थी, जहाँ बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं थे, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी कामयाब हुई। क्या फीलिंग आती है जब आपको इस तरह से कि आप आइए, जब हम भारत की बात कर रहे हैं या हम इंडिया की बात कर रहे हैं या हम वतन परस्ती की बात कर रहे हैं, तो वहाँ विवेक अग्निहोत्री का नाम अपने आप आता है। हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? डू यू थिंक समवेयर डाउन द लाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर गोज अप? नहीं, वो आई एम सॉरी, आपने हिंदी में पूछा, हिंदी में जवाब दे देता हूँ। मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ all in your mind that a film without star cast, ab kya hoga? This is in your mind. You have been taught from your childhood by media and all those people that without a star film can't work. But I know it for sure. I mean, there's evidence and there's a science to prove that films work only because of their story and their intent and never with the star power. So that is first thing. Second thing is when you say, अच्छा अब आपके सर पे और responsibility आ गई, तो मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है जैसे कुछ बर्डन आ गया आपके ऊपर, अब आपको बिहेव करना पड़ेगा, अब आप ऐसे बात करिए। मैं जैसा पहले था वैसे ही अभी हूँ। आप मेरा ट्विटर खोलिए, जैसे पहले ट्वीट करता था वैसे ही अभी करता हूँ, तो नथिंग हैज़ चेंज्ड एंड नथिंग विल चेंज, क्योंकि मैं पहले भी रिस्पॉन्सिबल था। तो मेरे को कोई ये नई चीज़ नहीं है कि सडनली मैंने कोई एक पेट्रियाटिक फिल्म कर ली एंड इट्स बिकम अ हिट और सब ने कहा अरे अरे अब तो आप ये, और अब मैंने कहा अब मेरे को अलग तरह से बिहेव करना पड़ेगा। मैं जैसा पहले था वैसे ही अभी हूँ। मेरा दिल अभी भी Indian culture, Indian philosophy के लिए धड़कता है, and that's all I want to promote. And this film, after this I won't answer anything. This film, I want to tell you why it's a very, very special film. Any film, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी फिल्म को सिर्फ ट्रेलर देख के कि ये कैसी होने वाली है, the first thing you should judge is the intent and the sincerity and the honesty of the makers. So about Shankar, I can say I've known him for a long time. Is one of the most honest people I have met in my entire life. His intention is so pure about it. And then he's got a wonderful crew and team and sincere people. It's an honest film. And a lot of people, everybody I know complains ki why film industry is not changing. This is the change. This is how it is changing. एक आखिरी सवाल विवेक सर, आपने अभी ट्विटर का जिक्र किया, आपने ट्विटर का जिक्र किया और हम सब आपकी बेबाकी से, जाहिर है सबको आपकी बेबाकी, कितना मुनासिब है और कितना सही है किसी फिल्म को बायकॉट करना? क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के अलावा उसके अंदर टेक्नीशियन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, बहुत लोगों का मेहनत होती है और किसी एक शख्स की वजह से इकोनॉमिकली कहीं सब कुछ हिल जाता है। देखो, ऐसा है कि इस बात को करना नहीं चाहिए अभी, लेकिन बॉयकॉट करना एक इंडिविजुअल राइट है। हम फेमिनिस्ट राइट्स की बात करते हैं, हम लोग आदिवासियों के राइट्स की बात करते हैं, हम लोग
जानवरों के राइट्स की बात करते हैं, हम लोग डॉग्स के राइट की बात करते हैं, कैट्स के. सो आई थिंक बॉयकॉटिंग एनीथिंग इज एन इंडिविजुअल राइट इन अ मार्केट प्लेस. बट द सेकेंड थिंग इज़, ये बॉयकॉट की सिचुएशन आई क्यों? और तो ऐसा है कि जैसे कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोलगेट बेचता है फॉर एग्जांपल, और कोलगेट बेचने वाला अपने ही जो कस्टमर्स हैं उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले, अरे जो लोग सुबह उठ के ब्रश में टूथपेस्ट लगा के करते हैं वो तो सब इडियट्स हैं. तो आप क्या करेंगे, कितने दिन तक कोलगेट खरीदेंगे? सो ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की भी बात है कि आज क्या कारण है कि ये नौबत आई है. एंड ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बॉयकॉट बहुत फिल्मों का होता है. कश्मीर फाइल्स का तो पूरे के पूरे बॉलीवुड ने, इकोसिस्टम ने, क्रिटिक्स ने, मीडिया ने, सब ने बॉयकॉट कर दिया था, थिएटर्स ने, एग्जिबिटर्स ने. लेकिन अगर सत्य में दम होती है और अगर आपकी फिल्म ऑनेस्ट है और सच्ची फिल्म है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती. हेलो. थैंक यू वेरी मच. एंड आई थिंक आई टेल यू व्हाट, आई एम अ वेरी मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ. एंड आई थिंक इट्स प्रोफेशनली इनअप्रोप्रिएट फॉर मी to hog the limelight at this point of time. It is not about us, it's about the film. So please let's focus on the film. सर लास्ट क्वेश्चन सर, फिल्म से रिलेटेड ही है सर. फिल्म से रिलेटेड ही है. लास्ट क्वेश्चन है सर. Sometime else. सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, प्लीज आप रहिए सर. क्या आपको लगता है कि सर ये फिल्म जो है आजकल जो फिल्में बन रही है नेशनलिस्ट फिल्म ही चल रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि नेशनलिस्ट फिल्म ही चलेंगी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड में? भूल भुलैया तो नेशनलिस्ट फिल्म नहीं थी, गंगूबाई भी नेशनलिस्ट फिल्म नहीं थी, दोनों चली कि नहीं चली? पुष्पा भी नेशनलिस्ट फिल्म नहीं थी, केजीएफ भी नेशनलिस्ट फिल्म नहीं थी, कैसे चली वो सारी फिल्में? फिल्म अच्छी होनी चाहिए, सब चलता है. थैंक यू वेरी मच. Congratulations, all of you. The trailer looks brilliant, and as I immediately reacted after seeing the trailer, I can't wait to see the film. I'm extremely passionate about cinema. I've always been, because I started working as a child actor. So my entire life has only been about creativity and nothing else. But before I speak more about the film, I would like to speak a little about Shankar. I'm so glad that you have made this movie, Shankar. He's a very dear friend and one of the best human beings that we've come across. The way he worked to make the Kashmir Files premiere happen in Raleigh, it was a great effort, and Kashmir Files has set an example of how Indians can come together and make something happen. It truly became a people's movie. And I'm seeing the same reflection in this film as well. Because as it's history now, the 36 organizations came together for the premiere of Kashmir Files. There was Sikh organization, there were All India, All American Jews organization, there was the Telangana Association, there was the Marathi Association. Similarly, you see the Punjabi, Bengali, Telugu, Marathi, all of them coming together and fighting against the evil. And it really gladdens my heart that, a young India is emerging as a more powerful, as a more patriotic India. And the dreams that we've all seen are coming to fruition in this generation. I wish you all the best. May you all do very well, and may you become big, shining stars of the country. But just as a senior actor, there is one request from my side, that a director always directs, an editor always edits, but an actor, when he becomes a star, sometimes forgets to act. Please don't do that. Remember that you're actors first. That's what our profession is called. So always be true to your profession. And wish you all the best. And you said that you're not very good at speaking. You don't have to be. You make the actors speak so well with your dialogues. So all the best to all of you, and congratulations. My question to you is, as you are already based in US and you are here for this film called Bharateeyans, tell us how this whole, a whole project started, when you started working on a film like Bharateeyans, where we talk about India, Indians. So, Ji, thank you for the wonderful question. I am 57-year-old. 57 years, of 57 years, 30 years I've been living in US. So more time in my life so far, I've been living in US. But every day my heart belongs to Bharat, every single day. My DNA made of Bharat,
my character made of Bharat. Whatever I have achieved is just because of Bharat. This land, this air, this water made me what I am supposed to be today, what I'm doing today. So every cell in my body belongs to Bharat. I'm just living there in the US, but from there, I want to do everything I can do, help my motherland, to talk to younger generation, just to reiterate the message that the Bharat is the greatest country in the whole planet. Because of that, this media, the importance of media is, if you write a book, it takes a lot of efforts to make the people read a book. If you make a movie or a documentary or any other media, it is much powerful, much more easy to get across to wider audience all across the nation. So that is the reason to make a movie, something like this. And again, main inspiration is Vivek ji. From the way he works, the time he puts, all his thoughts are about Bharat. He is our main inspiration. And so Dinaraj. He is extremely ferociously patriotic, just like Vivek ji. Thank you for your question.